हेलो, कैसे हो सब लोग? हेलो 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 हेलो, एम आई लाइव? क्या मैं लाइव हूँ? यस। ऑडियो चेक कर लेते हैं भाई, वेट। लाइव हूँ, यस। ऑडियो क्रिस्प एंड क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर। तो आज मैं जाने वाला हूँ गेम प्लस प्लस। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू गेटिंग गेम प्लस प्लस गेम प्लस NG प्लस न्यू गेम प्लस टू बी प्रोसाइज। ठीक है, पता नहीं कैसे दिख रहा हूँ, लेकिन लेट्स गो नाउ। बिफोर गोइंग गेम प्लस मैंने कुछ चीज़ें कर ली हैं, जैसे कुछ चीज़ें जिन्हें मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। ओ, कुछ चीज़ ऐसे भी तो होनी चाहिए अगर मैं गेम प्लस में जाता हूँ। चलो एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, है ना। थिंग्स टू डू। वो न्यू गेम प्लस प्लीज किसी ने वीडियो डाल रखी हो, पता है। हाँ, एवरीथिंग यू कैन मिस बिफोर NG प्लस, ये देखते हैं। आ जाओ भाई, लाइव पे देखेंगे। आ जाओ भाई, चलिए मैं अलग से देख रहा था। Locked in over 250 hours in Black Myth Wukong, and this video is absolutely everything you can completely miss in a single cycle of this game. Let's get straight to it. First things first, the Rat Prince Spirit. So I finally have acquired this, the Rat Prince. The second Rat Prince completely evaded me because I didn't kill that boss a certain way. Let me explain myself. In Chapter 2, you're going to find the second Rat Prince as well as his father in a courtyard right in front of the Valley of Despair Shrine. This is where you encounter them, and you're going to have to fight them. In my first cycle, I killed the large one. The father ran off, he summoned in the first Rat Prince, and that was the end of the fight. But that is the wrong way to go about doing it. What you have to do is, you have to actually kill the father first. The second Rat Prince himself is going to enrage. Then when you take him out, you're going to receive his spirit or soul so that you can absorb it and get him as a spirit. At which point, you're also going to get a special item dropped inside of your inventory, which is going to be this key item right here, the Pugnant Flesh Chunk. You're going to take this over to the area where you fight the first Rat Prince, toss it off the edge, he'll come up, you summon him, you fight him, you're good to go. So that's going to be what you need to do in order to get the second Rat Prince as a spirit in Black Myth Wukong. And you can clean miss out on this, so be careful. Let's keep going. Chapter 3, Break the Goat. Okay, so the secret ending and the secret boss fight against Erlang can be completely missed in the game, that's obvious, but you can go to the Great Pagoda at any time during your playthrough to guarantee that you get chapter before your final battle. All of his arms. If you do so, you will receive the Venomous Arm Guard, which is one of the items that I completely have to basically slap him from the back to knock off all of his arms. If you do so, you will receive the Venomous Arm Guard, which is one of the items that I completely missed out on in my first playthrough. Kind of unfortunate because it really would have made my poisonous build a lot more potent and a lot more powerful, but I digress. This is something that you can completely skip, so I'm letting you know. All you have to do in chapter सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, है ना। Jade, go see him, fight him, knock off all of the arms on his back, get the cutscene, and then continue the fight. Once you finish, you'll receive the Venomous Arm Guard, you're good to go. Next up, the talismans. In the same chapter, in chapter 4, there's going to be 4 talismans that you have to collect before you fight the boss. अच्छा, if you do not collect these 4 talismans, you will not be able to get the special item in the chest that's locked away in this area at all until you go into New Game Plus to do so. So just be careful. Make sure you collect all 4 of the talismans, the little purple talismans hanging. Snatch all of those up before you fight the final boss. If you don't skip any of the spirits throughout the entire journey, you can actually get all 54 of them and receive the trophy in Black Myth Wukong. So make sure you're on the lookout. I've received every single spirit in this game and I have a bunch of guides here to teach you where to find them. So if you have any questions, let me know down in the comment section below. Wine worms. There's going to be 12 wine worms in the first cycle. I'm not necessarily sure if the ones that you can buy off the Shin Monkey are going to be available in the second cycle because I haven't reached the Zodiac Village just yet. But as soon as I reach that, I'll leave it down in a pinned comment below so that you know. However, what I've discovered so far, if you don't receive these wine worms in your first cycle, you can go to those exact same locations in your second cycle and receive them. But you won't be able to fully upgrade one of the drinks in the game. You can use these wine worms to upgrade the lamb brew to the dried spirit. You also use these same things to update your coconut drink. Once you upgrade your coconut drink to its maximum, and if you have all the other soaks and gourds in the game, as well as the other drinks in the game, you will receive the trophy. So far, I was able to collect, I want to say, 27 soaks in the game, and I collected all of the drinks in the game. Blue Bridge Romance Brew. Different enemies in the game, other soaks you can find within.
I collected every single last one of these soaks. Some of the different soaks drop from different enemies in the game. Other soaks you can find within special case or chest. So you're going to have to be on the hunt for these. I'm going to have a guide on all the really difficult soaks that you need to get out there coming real soon. Basically, all the gourds that I received in the game are supreme. The fire to finally update, I think I'll be able to unlock the trophy. So make sure you're out there on the hunt for those wine worms. There's 12 in the games, and I'm going to have a guide of every single wine worm coming real soon. Pagoda realm. When you're in the pagoda realm, there's going to be these lantern guys that are extremely annoying. They're going to start singing before you fight Captain Wisevoice. If you do it in that order, you're going to receive a special Kreo. The only way to receive that Kreo is to actually defeat them before you take out Captain Wisevoice, so just be careful. If you do it in the reverse order, you're done. And make sure you're going out there and you're fighting all the different bosses in the secret zone to receive their special item after defeating them. Wukong, the Scorpion Lord, and the Bull King. Those guys, if you take them down, you're going to receive their special item after defeating them. You're going to take those special items into New Game Plus, and that will guarantee that you can not only get their gear sets if they have one, but you'll also be able to get the final weapon of the tree. These are some of the most powerful, the secret ending. So, the Rat Prince, don't forget about him. Go back to the Great Book of Arms for the Poison Taoist. ठीक है भाई, चलो भाई इसी के साथ न्यू गेम प्लस चालू कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं फिर से लैग करने लगा क्या, है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो मैंने आज ही देखी है, पता है, जो कि है ये। पहले मैं क्या बताना था, पहले मैं बताना वाला था कि क्या जर्नल्स में मैंने मेडिटेशन स्पोर्ट सारे ले लिए हैं, 5 5 6 6 6 6 3 3 4 4 हर जगह के, है ना, पोर्ट्रेट में। लेकिन एक चीज़ है, लेसर युगाइस मैंने सारे मार दिए हैं। युगाइस चीफ में तो क्या हो रहा है, यहाँ पर है अर्पणा बोट, मेरे को इतना याद भी हो गया, पता नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर अर्पणा बोट, जो कि मैं मार चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ग्लिच हो रखा है, अगले गेम में सही होगा। बिटर कमांडर, यहाँ पर एक और है जिसे मेरे को पहले मारना था किसी इवेंट से, लेकिन मैंने वो इवेंट कंप्लीट कर लिया तो उसे नहीं मार सकता, तो इसलिए ये भी चीफ नहीं होगा मेरा। करेक्टर्स में लिटरली यहाँ पर स्टोन वुकोंग है, उससे मैं मिल के आया हूँ, उससे मैंने मारा है, तब भी अपग्रेड नहीं कर रहा है। और नीचे वो वाला बुड्ढा जो हमें गार्ड देता है शुरुआत में, उससे कभी पूरा मैंने स्टोरी लाइन कम्प्लीट कर ली, देखा मैंने, तो वो भी अपग्रेड नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आई मीन मैंने तो कंप्लीट कर दिया है, युगाई किंग्स मैंने सारे मार दिए हैं और मैंने अपडेट भी कर दिया। तो लेट्स गो, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज दिस, जो मैंने आज ही देखा है, रिटर्न ऑफ राइवल्स। ये क्या है मुझे जानना है। The challenge is immense, yet the greatest sage will always prevail. Hold to start challenge. Confront your rivals' fears as when you first met them, fight them to hone your skill. एक सेकेंड, ग्रेट सेज, क्या मैं इनसे फाइट करने वाला हूँ? Foul beast, step forward and listen to with boundless might. I roam the skies fearless and free, where no limits lie. In boredom, I tame tigers with ease. What the Let's go, let's go, let's go. मारो मारो मारो। ब्रो उसकी हेल्थ बड़ी धीरे कम हो रही है। मैं व्हाट्सएप पर कर रहा हूँ भाई, यूट्यूब में दिक्कत है।
भाई मैंने मैसेज तो कर दिया फिर से वाईफाई वाले को, आई डोंट नो क्या रिप्लाई आता है भाई। भाई ये क्या हेल्थ रिड्यूस थी मेरी ब्रो, इसका मतलब आई नीड टू बी स्मार्ट इनफ भाई, आई नीड टू बी स्मार्ट इनफ। क्रेजी। भाई क्या चल रहा है? भाई क्या स्ट्रीमिंग है भाई, ये क्या स्ट्रीमिंग है भाई ये। उछलना हंसदा फिरा, उछलना नचदा फिरा, उछलना गली गली। भाई यार क्वालिटी तो सही आ रही है यार। पता नहीं भाई गेम चालू करते ही क्या हो जाता है। भाई इसे कैसे मारूंगा भाई मैं? डिफिकल्टी ग्रेड सेज है भाई ये। इतनी अगर डिफिकल्टी होगी, फिर तो नहीं होने वाला। फिर लैग करने लगा यार। मारो 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 मारो। ब्रो ब्रो भाई साहब, बूम लेट्स गो भाई। ओ भाई साहब, वो तो मेरे कुछ मिलेगा नहीं इन्हें मार के। इन्हें मार के कुछ मिलेगा नहीं मेरे को। डैम भाई। यार स्टांस ले सकता हूँ मैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स से का ये हो रखा, ये तो पूरा ही कर दिया मैंने। रॉक सॉलिड लू मैं नहीं रहता। इसे ये भी सब कुछ अपग्रेड हो ही रखा होगा लगभग।
रोलिंग बॉल कौन सा था? रोलिंग बॉल कौन सा था? क्या रोलिंग बॉल को अपग्रेड की ज़रूरत है? अच्छा मैं भूल गया, रोलिंग बॉल तो स्पिरिट है। बोले तो रोलिंग बॉल तो स्पिरिट है। मैं माय बैड माय बैड माय बैड, मैं भूल जाता हूँ बार बार कि रोलिंग बॉल तो स्पिरिट है एक। ठीक है, इधर भी सब कुछ हो गया। मेरे ख्याल से तो यही बचा है अब करने के लिए। ओ भाई, भाई फिर से लैग कर रहा है। यूट्यूब इज नॉट इनफ वीडियो मेंटेन टू स्मूथ स्ट्रीमिंग एज मच एज व्यूअर्स विल एक्सपीरियंस। अच्छा जब भाई इनको मार के कुछ मिलेगा नहीं मेरे को, तो मैं इनको क्यों मारूं मैं? ओ भाई क्या चल रहा है भाई? It's not like you are hitting a very specific portal like this is frustrating because the raw internet speed on YouTube is more than enough for high streaming. The rate is not receiving enough data to maintain smooth. It usually means there is a traffic jam between your computer and YouTube specific ingest server. Even if your overall internet is fast, check the regional issue. If you use a specific YouTube recently generated a major regional above, the quality is no data error and extreme lagging. ओ, इसकी स्ट्रीम की रिसेट मारूँ क्या? एक सेकेंड।